Hello everyone. So today I'm going to be explaining first chapter of understanding computer application with Brucher class 9. So the first chapter is Introduction to Object Oriented Programming Concept. Unit 1 Principles of Object Oriented Programming. So computer is an electronic device that accepts instructions in a specific language. तो बेसिकली कंप्यूटर क्या है एक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है वो अपने लैंग्वेज में ठीक है मतलब वो कौन सी लैंग्वेज समझता है बाइनरी लैंग्वेज ओके hence it is very difficult to establish communication between the user and the computer if he or she is not aware of computer language मतलब लाइक बहुत डिफिकल्ट होता है अगर हम लोग को बाइनरी लैंग्वेज मालूम नहीं है तो कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है ओके this is the reason why learning computer language is very essential for working on the computer. इसलिए हम लोग को कंप्यूटर लर्न करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के साथ काम करने मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज लर्न करने के लिए बहुत लाइक बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द कंप्यूटर लैंग्वेज टू वर्क on the computer. So there are like types of computer languages. The computer languages are basically categorized into two levels. They are low level languages and high level languages. This is really important. Like computer has been categorized into two levels. Easy करने के लिए computer level languages को two levels में categorize किया low level और high level. Okay. So low level क्या होता है? We'll see. The low level languages are type of computer language in which computer recognize the instruction without conversion into any other form. लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि हम लोग कुछ लिखते हैं और हम लोग कन्वर्ट नहीं किए जैसे लाइक वी write binary language 0 and 1 binary language is nothing but 0 and 1 we write in the form of binary language and it doesn't convert into the computer language because binary language is something binary language is only the thing which computer understands so like it doesn't convert into any other form okay. These type of languages were used in the early computers. Early computers भी use होते थे. When only the experts were able to code the sorry, I'm so sorry. Where only the experts were able to code the instruction. Experts लोग बाइनरी लैंग्वेज मतलब ऐसे डिफिकल्ट लैंग्वेजेस कर पाते थे इसलिए तो अभी इजी सी जावा आ गया है सी प्लस प्लस पाइथन आ गया है लैंग्वेज द लो लेवल लैंग्वेजेस आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू machine language and assembly language which we'll learn further. Machine language क्या होता है? It is the form of computer language in which instructions are coded in a term of binary digits. Machine language क्या होता है? हम लोग मतलब कोड करते हैं in terms of binary digits. Okay, digits are also known as bits. That is in the form of zeros and ones. Okay, zeros or ones में रहता है. This form of binary instruction is called the machine code. मतलब हम लोग जो लिखते हैं बाइनरी इंस्ट्रक्शन बाइनरी मतलब जो लिखते हैं अभी जैसे हम लोग ने कुछ लिखे हैं 0 1 में और जैसे इन कंप्यूटर जैसे कि इन कंप्यूटर 1 is 0 0 1 something है आई डोंट नो ओके सो 1 is 0 0 1 ओके फॉर एग्जांपल ओके इमेजिन ओके तो अभी हम लोग को ये लर्न करना कितना टफ होएगा ना कि हम लोग को ए टू जेड पूरा एक एक मतलब कोड्स है तो हम लोग जैसे लिखे तो वो ना कंप्यूटर तक जाएगा फिर वो कंप्यूटर समझेगा फिर हम लोग को आउटपुट देगा ओके वैसा है फिर दिस फॉर्म ऑफ बाइनरी इंस्ट्रक्शन इज आल्सो कॉल्ड मशीन कोड जो बाइनरी इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होता है इनटू मशीन लैंग्वेज नॉट कन्वर्ट होता है कन्वर्ट नहीं होता है जो बाइनरी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उसको बोलते हैं हम लोग मशीन कोड ओके. The computer understands the machine code easily. Machine code अच्छे से understand कर लेता है. That is, it does not need to be transferred or converted into any other form. This is really, really important. It doesn't have to be transformed or converted into any other form. वो transform या फिर convert नहीं कर सकते any other form क्योंकि binary language is the only thing that computer understands. Okay. The only advantage of this language is that program executes faster. Okay, because the machine process the code is directly operated by the CPU. इसलिए क्योंकि हम लोग ने जैसे कोई प्रोग्राम लिखे अभी हम लोग ने सपोज हाँ मतलब जावा में लिखे नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में तो उसमें क्या होता है उसमें ना 1 सेकेंड ना अभी जैसे
मैंने ये मतलब कुछ भी प्रोग्राम लिखी, फिर उसके बीच में एक लेयर होता है समझो, मतलब वो कन्वर्ट करता है, ये जो प्रोग्राम लिखी हूँ मैं, ये प्रोग्राम है समझो, और फिर ये ट्रांसलेटर है, ठीक है, ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन कोड, मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, फिर ही तो हम लोग का आउटपुट आता है ना। ओके, सो आई होप कि ये समझा कि लाइक एग्जीक्यूट फास्टर बिकॉज द मशीन कोड इज डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय द सीपीयू, मशीन कोड सीपीयू को मतलब कंप्यूटर को जल्दी समझता है, इसलिए बहुत इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। द यूजर नीड्स टू रिमेम्बर ऑल द इंस्ट्रक्शन कोड, लाइक डिसएडवांटेज क्या है कि मतलब यूजर को पूरे इंस्ट्रक्शन कोड याद करना है, जैसे वन को क्या बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, टू को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, बी, ए टू जेड, मतलब सेंटेंस टू सेंटेंस सब याद रखना है। एंड द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज डिफिकल्ट, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बहुत टफ होता है, जैसे अभी ए वन को लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोली थी 001 है, ठीक है, तो अभी हम लोग ने बहुत सारा लिखा, हम लोग को समझेगा कि 001 002 ऐसे, मतलब 001 101 ऐसे लिखा है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, मतलब बहुत टफ है समझना, समझ रहे हो। इट इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, वो मशीन में डिपेंडेंट करते हैं क्योंकि वो सीधे डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इनटू, मतलब कन्वर्ट नहीं होता सॉरी, इट इज डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज इज सीधे इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज, so it is in the so it is machine dependent language। ओके, फिर हम लोग का नेक्स्ट आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? A language in which the instructions are coded in the term of mnemonics and OP codes, op codes और OP codes। op codes क्या होता है? ऑपरेशन कोड, दैट इज op code, मतलब उसका ना मतलब mnemonics क्या होता है? The abbreviation of sentences or the values or instructions, and op codes are the like which translate into binary language, I mean like into machine code। So basically what happens is that, wait, हाँ, कि if this is LDA, see if this is LDA, LDA means enter the value in A, so if I write LDA, ठीक है, अभी ना मुझे उसको चाहिए मशीन कोड, मतलब भाई मशीन कोड मतलब कंप्यूटर को समझना है एलडीए क्या होता है, तो निमोनिक्स एलडीए, ठीक है, तो कंप्यूटर ना ऑप कोड भी समझता है, मतलब लाइक अभी ये ट्रांसलेट हुआ इनटू ऑप कोड, ओके, दिस मतलब एक लेयर होता है, जैसे समझो एलडीए लिखी, ये निमोनिक्स है, ये निमोनिक्स है, and there is a layer of translator, okay, then this is opcode which translates into machine code, this is machine code, so basically this is machine code. Mnemonics has been translated into, converted into opcodes, and then opcodes is further converted into machine code. Okay. The mnemonics are the abbreviated form of instruction. It is the short form of the instructions used for writing a program. Whereas the opcodes are the numeric codes of the instruction. Basically, opcodes क्या है? It is defined as the letter and a number, okay, of the instructions that are actually fed to the computer for execution. The instructions in assembly language are readable to some extent as compared to machine language। मतलब इन असेंबली लैंग्वेज हम लोग रीड कर सकते हैं, मशीन लैंग्वेज को मतलब समझ में ही नहीं आएगा मशीन लैंग्वेज है क्या, मतलब एक्सपर्ट्स लोग ही समझ पाते थे। अभी जावा आ गया, पाइथन आ गया, सी प्लस प्लस, एल्गोल, ये सब आया, तो मशीन कोड्स वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ओके, हद तक हम लोग को मशीन को थोड़ा बहुत ही समझता था, असेंबली लैंग्वेज आया तो ना अभी थोड़ा बहुत समझने लगा कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। बिलो आर सम निमोनिक्स एंड ऑपकोड्स इलस्ट्रेटेड फॉर योर रेफरेंस, तो ये निमोनिक्स है, डिस्क्रिप्शन ऑपकोड, तो ये निमोनिक्स, ओके, एलडीए मींस एंटर द वैल्यू इन ए, उसका ऑपकोड्स 3 थी, एलडीबी एंटर द वैल्यू इन बी 73, तो ऐसे मतलब एब्रिएवेशन दिए, तो एच एल टी मतलब हॉल्ट होता है, एस टी स्टॉप, ऐसे सब दिया। The instruction given in assembly language are not directly understood by the computer. Hence, a translator is required to convert the instructions coded in the assembly language to its equivalent machine code, which is known as assembler. So, अभी मैंने assembly language लिखी, which is mnemonics, as LDA सब लिखी, which is translated into
So I said ki like this assembly language is translated into assembler. Okay. So this is mnemonics and this is opcode and this is machine code. Opcodes is further like machine code में जाता है and computer फिर समझता है okay तो इसने ये बोला ठीक है तो execute करता है वो जो मैंने लिखी हो ठीक है. Advantages of assembly language और also हाँ equivalent machine code मतलब कि अभी जो हमने लिखे हैं जैसे एलडी है ठीक है अभी उसका आपको कुछ था ठीक है तो मशीन लैंग्वेज मशीन कोड तक गया अभी मशीन कोड तक जाते तक कुछ और हो गया तो वो इक्विवेलेंट नहीं हुआ वो चेंज हो गया ना दैट इज नॉट इक्विवेलेंट. Then the advantages of assembly languages are it is easier to write the instruction as compared to machine language. मतलब इंस्ट्रक्शन लिखना इजी है मतलब कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज का कैसा कितना टफ है. द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज आल्सो कंपैरेटिवली इजी. ओके थोड़ा बहुत इजियर है. द कोड कैन बी इजीली मॉडिफाइड ऑफ कोर्स इट कैन बी इजीली मॉडिफाइड बिकॉज हम लोग को समझ में आ रहा है क्या है बाइनरी लैंग्वेज में क्या है 0 1 0 1 1 0 1 ऐसे समझ भी नहीं आएगा किसी को. Limitations of computer assembly language. It is also machine dependent. वो भी मशीन डिपेंडेंट है क्योंकि उसमें ना थोड़े बहुत ही जैसे लाइक उसमें भी हम लोग अपने ओन लैंग्वेजेस यूज नहीं करते तो हम लोग को सीखना पड़ता है उसको भी. अभी हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है हम लोग अपना सेंटेंस और अपना इमेजिनेशन यूज करते हैं कुछ भी अपना यूज करता है फिर वो कन्वर्ट होता है मगर ये तो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है एज लाइक सेम लाइक मशीन कोड बिकॉज इसमें भी इतना ज्यादा चीजें नहीं है बहुत कम है हम लोग को मेमोराइज करना है देन इट इज कन्वर्टेड इनटू दिस एंड मशीन कोड. यस द यूजर्स नीड टू रिमेम्बर ऑल द निमोनिक्स. ये जो है ये जो ऊपर टेबल था ये इतना सा निमोनिक्स नहीं है और भी है निमोनिक्स बस नहीं है और है बहुत है. ओके बहुत सारे निमोनिक्स याद करने हैं. ओके लिमिटेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इट इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट. ये हो गया ना हाँ. अ ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड. अभी ये असेंबली लैंग्वेज है ठीक है ये समझो असेंबली है इट इज बीन कन्वर्टेड इनटू असेंबलर देन इट्स बीन कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड. ओके यू डिड यू अंडरस्टैंड. ऐसा है. फिर आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज आता है उसमें क्या होता है कि to overcome the disadvantage of low level language, the experts, system developers, develop another category of languages which are referred to as the high level languages, HLL. These languages allow the user to write the instruction in simple English phrases or sentences. It also uses common English words and mathematical symbols. Common English word जैसे हम लोग अभी यूज कर रहे हैं इंग्लिश के वर्ड्स वो and mathematical symbols like plus, minus, divide, multiplication, and all. Okay, where thus it makes the instruction easier to understand in the user's native language. हम लोग का जो native language है that is English. Like अभी तक कुछ आया नहीं है मतलब चाइना में बन रहा है like program in Chinese, हिंदी, इंग्लिश वही इंग्लिश आया अभी तक बस. हम लोग अपने नेटिव लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं. It allows the user to it write the instruction even he is not aware of hardware architecture of the computer. Basically ये जो है हार्डवेयर आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर ये क्या है हम लोग को जानना नहीं है. सीपीयू के अंदर क्या है वो कैसे डेटा ट्रांसफर कर रहा है यहाँ से वहाँ वो हम लोग को नहीं जानता है. वो लो लेवल लैंग्वेजेस में हम लोग ऐसे जान रहे थे एक्सपर्ट्स लोग ये सब करते थे. हम लोग इसमें हम लोग को कुछ नहीं जानना है बस हम लोग को दो चीज याद रखना है हार्डवेयर आर्किटेक्चर में रैम याद रखना है और लाइक कितना मेमोरी स्टोरेज है ये सब नहीं याद रखना कैसे ट्रांसमिट करता है यहाँ से डेटा. ओके फिर आता है the programming style and context is comparatively easier to learn. The entire code focuses on the specific program to be created. Exactly. मतलब like it is very easy to learn and जो हम लोग लिखते हैं like वही हम लोग जो हम लोग के माइंड में चलता है कोड वही सब हम लोग लाइक लिखते रहते हैं and वो कन्वर्ट और आउटपुट देता है. बेसिक
C, C++, Java and Python are some popular example of high level language. Basic भी एक है, C++, C, Java is like very important and Python भी है. वो सब high level languages के example है. फिर आता है advantages of high level language. It is a machine independent language, okay? Machine independent है. The instruction can be written using English word or phrases, of course. मतलब English words or phrases use करके लिख सकते हैं. And it is easier to understand and develop the program. जैसे प्रोग्राम कैसे बना, कैसे आया, वो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लाइक क्या मतलब हम लोग बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए. द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज ऑल्सो इजी. या इट इज वेरी इजी बिकॉज लाइक इंग्लिश को लिखा है. Disadvantage of high level language, it requires a translator. मतलब उसको एक translator चाहिए to convert the source code. Source code is nothing but a program into machine code. Machine code like computer के जो अंदर codes होते हैं, we have to convert that source code. Like source code is further translated into machine code. Okay. The machine code of high level instruction might be less efficient than the machine code generated from assembly language instruction, of course. One of the major disadvantages of high-level language is that machine cannot understand the language directly. It cannot understand the language directly. This is very important. कि ना like high-level language में क्या होता है कि जैसे कि one second, हाँ, अभी ये source code है ये program. It has been further converted into a translator, and this translator helps to convert into machine code. ये मशीन कोड है, तो इस पे क्या लग रहा है, मतलब कंप्यूटर डायरेक्टली तो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा ना, ये लैंग्वेज नहीं कर रहा है ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड. उसको क्या चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, ट्रांसलेटर, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो वो नहीं समझेगा. अ मशीन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज समझता है, इसलिए वो हम अपनी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, जैसे बाइनरी लैंग्वेज ही समझते हैं. Hence, we need to convert the instruction written in high-level language into the equivalent instruction in machine language so that they can be operated upon the CPU. ये अभी समझाई थी. The translator language process used to be performed above method tasks are referred to as compiler and interpreters. Let us understand the functions of these translators. Okay. So like we need compilers and interpreters to convert it into source code to machine code, and that is really important. Compiler. फिर आता है हमारा compiler and interpreter. A program in high level language need to be converted into machine code. Machine code is binary language, okay? Binary code, so that computer can understand the instruction for processing. But अब like हम लोग को ना, हम लोग ने जो लिखे हैं, that should be converted into machine code with the help of compiler, so that computer can understand the instruction easily for giving us the output, okay? If the program contains any error, then it must be corrected for successful execution. अभी हम लोग करते हैं जावा में. अगर देखो, अभी मैंने ये एक प्रोग्राम बनाई हो, ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने ये पैरेंथेसिस कंपाइल करी, नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि वो कोई तो मिस्टेक है, कंप्यूटर मशीन कोड ने दिया सीधे आके, इंस्टेंट ही होता है ये. फिर अभी ना ये सिंटैक्स एरर बोलते हैं कि यहाँ पे जो एरर्स बता रहे सिंटैक्स एरर. फिर अभी मैंने ये पैरेंथेसिस डाल दी, फिर कंपाइल करोगे. सी, दिस this whole source code is been translated, that is, it has been compiled into machine code, okay? If the program contains any error, it must be corrected for successful execution. The conversion of high level language source code to machine language binary language can be done in two ways, either be using a compiler or an interpreter. मतलब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कंपाइलर यूज कर सकते हैं या फिर इंटरप्रेटर. A software that accepts the whole program written in high-level language and converts it into equivalent program in machine language is known as compiler. So basically, the program which is written in high level, मतलब high level language में हम लोग लिखे normal language जावा में लिखे, ठीक है, जावा एक language है, उसको compiler convert करते हैं into equivalent program in machine code, in machine language, वो होता है compiler.
The program which compile uses for conversion is known as the source program or source code. Okay. So basically इसका मतलब क्या है? The program which compile user uses for conversion is known as source code. तो अभी ये जो पूरा है, ये पूरा जो सोर्स है, ये क्या है? सोर्स कोड. Okay. Or source program. The program converted into machine language is known as object code or object program. ठीक है. अभी हम लोग ने वही सोर्स कोड को कन्वर्ट किया into मशीन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड इज नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. मतलब मशीन लैंग्वेज को मतलब हाई लेवल सोर्स कोड को हम लोग ने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया इज नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. बेसिकली हियर द ऑब्जेक्ट मतलब मशीन. ओके. ऑब्जेक्ट मीन्स मशीन हियर. ओके. तो हम लोग ने क्या पढ़ा अभी? हाई लेवल लैंग्वेजेस का. हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हम लोग ने जो लिखे है सोर्स कोड लिखे हम लोग ने जो is converted into सिस्टम प्रोग्राम. मतलब वही ट्रांसलेटर और कंपाइलर. फिर ये ट्रांसलेटर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड तक जाता है एंड देन वी गेट द आउटपुट. A compiler is designed exclusively to convert a program written in a specific high level language. कंपाइलर का क्या वर्क है कि वो ना कन्वर्ट करता है प्रोग्राम इनटू machine code. This means that each high-level programming language would require a separate compiler for conversion. Of course, her programming language, Java, Python, C++, Fortran and all requires a separate compiler. If we'll compile, समझ अगर Python का source code अगर हमें Java में डालना तो compile होएगा नहीं. For example, a Fortran compiler is capable of translating only a Fortran compiler program. इसका मतलब कि जावा कंपाइलर, ठीक है, फॉर्ट्रन एक कोई लैंग्वेज है, अगर जावा कंपाइलर इज केपेबल ऑफ ट्रांसलेटिंग ओनली जावा प्रोग्राम. समझा अभी? कंप्यूटर सिस्टम हैव मोर देन वन कंपाइलर और मोर देन वन हाई लेवल लैंग्वेज. मतलब कंप्यूटर कैन हैव मल्टीपल कंपाइलर्स इन हाई लेवल लैंग्वेज इन वन हाई लेवल. ओके. फिर है द सॉफ्टवेयर व्हिच कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन in high level language is line by line is known as interpreter. तो क्या होता है इसमें इंटरप्रेटर में कि अभी मैंने यहाँ पे कोड लिखी, ठीक है, ये कोड है, ठीक है. तो मैं इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन देखेगा, करेक्ट करेगा. अभी जैसे मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लिखी तो वो रॉन्ग करेगा. क्यों? क्योंकि मतलब मिस्टेक है वो. हर एक लाइन बाय लाइन जाएगा और जब तक हम लोग उसको सही नहीं करेंगे तब तक वो नेक्स्ट लाइन. अभी मैंने सही कर दी तो वो नेक्स्ट लाइन में गया, नेक्स्ट लाइन में देखा राइट है, ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में गया, यहाँ पे रॉन्ग है, सिंटैक्स कर रहा है, तो वो ऐसे रॉन्ग कर देगा. फिर मतलब रॉन्ग नहीं करेगा, सिंटैक्स से बताएगा. जब तक उसको सही नहीं करेगा तब तक वो कन्वर्ट नहीं करेगा. If any error found in any line, the execution stop that till it is corrected. जो मैंने बोली वही. This process of correcting errors is easier, but the program takes more time to execute successfully. It is time consuming because line by line, statement by statement, we have to find the errors and correct it. Okay. An interpreter is generally used in microcomputers. Interpreter is generally used in microcomputers. It helps the programmer find out the errors and correct them before the controller moves to the next statement. मतलब हम लोग को तब तक एरर नहीं मालूम पड़ता है जब तक हमें नेक्स्ट लाइन तक जाना रहेगा, तब तक पूरा मतलब कंपाइल ही होएगा, तब तक मशीन कोड से मतलब ऐसे नहीं आएगा. Compilers and interpreters are basically system softwares, which are also known as language processors. They basically are very important and it can convert into machine language and are also known as language processors, which translates something is known as language processor. The compiler is comparatively faster than interpreter. Compiler बहुत faster है interpreter से, but sometimes it's difficult to correct errors since it displays all the error time together. थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारे एरर एग्जीक्यूट मतलब बता देगा, तो मतलब हम लोग का डिफिकल्ट रहेगा ना एरर को सही करना भी. तो इंटरप्रेटर क्या होता है? हाई लैंग्वेज इनटू इंटरप्रेटर एंड देन इनटू मशीन लैंग्वेज. डिफरेंशिएट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट कन्वर्ट्स द होल सोर्स प्रोग्राम into object program as one. It converts the source program into the object program one line at a time. Yeah, you have. It
displays the error for the whole program together after the compilation. पूरा error साथ में बताता है, ठीक है? And it displays the error one line at a time and only after debugging. Debugging means like correction. हम लोग जब तक correct नहीं करते तब तक वो next line तक नहीं जाएगा. Okay, so that's it for today. And like next video, I'll explain the types of high level language. Till then, bye.